Good morning, sir. Yes, good morning. Okay, let's start now. Good morning, all of you. Today, again, we are taking data communication networking third lectures. Related, I show you the network structures part. After that, topology, and then transmission media, twisted pair cable, optical, wired, and wireless. First of all, we have to see the wire. So let's continue. I am sharing your PPT. Again, we are just remembering our founder, Dr. Vinod Madhukar Gaikwad sir. We're giving Bhavapurna Shraddhanjali, and then we start our lectures. Welcome to Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, Tybcom, subject data communications and networking, module 1, computer system and applications. We have the four module, and inside that first module we already started, and now network part it is going on. So it is presented by Assistant Professor Bipin Vaity. So last time you have seen LAN, MAN, and WAN. What is that LAN? Yes, student, give me answer. What is LAN? Local area network. Area MAN? network. Yes, right. MAN? Metropolitan area network. Very good. WAN? Wide area network. Very good. Very good. So it is criteria just giving the difference related that LAN, MAN, and WAN. So cost wise, we can see the LAN it is low. Okay, we can get the 40 rupees cable for one PC to join. Yeah, otherwise we can easily take the switch, and we can join many hundred of computers in the one lab easily. That is a very low cost. MAN, high cost, because metropolitan whole city we have to connect. LAN it is only related to one building campus, but MAN it is whole city. That's why it is a high cost. And WAN of course higher, because it is a total internet working on just like satellite, antenna, towers. These are all that things are there, so it is called a higher cost. Next one, network size. LAN size is a small, okay, because it is in the one campus building, but MAN size is a larger and WAN is a largest. Speed, related speed, LAN speed is a fastest, 100 Mbps. That is what one LAN can send the data easily with the speed 100 megabyte per second, 100 megabyte. MAN slower than LAN, that is CT, slower than LAN, that is in the 50 Mbps, 40 Mbps, 30 Mbps. But WAN, it is totally slow. Now we can get it what? 1 Mbps to 7 Mbps, 5 Mbps. It is speed WAN, internet. That is a 5 Mbps is we say, most of us we say the what? Speed is good for internet. So that is the speed they are calculating on. After that, transmission media, that we have to see in this PPT. Twisted pair, that is a twisted pair we are using in the telephone system and LAN system. Twisted pair and fiber optical. Now at present in the LAN and MAN, we are using fiber optical. That is a light pulses we are sending for the network system. That is a fiber optical. It is very lightweight. After that, WAN, fiber optical also, radio wave, and satellite, because it requires the wireless also. Then LAN, number of computer connected, smallest. Okay, number of computer connected, smallest. And here MAN, larger. MAN is a larger, and WAN is a largest. Matlab, if we want to connect whole country, we can connect whole country with the one WAN, right? And city, we can connect whole city with the MAN, and in the one lab or one computer, so we can connect with the LAN. So that is a LAN, MAN and WAN difference it shows over here. Okay, is it clear? Fine. All of you got it? Yes, student? Yes, sir. Okay, fine. Reply me.
Next, now network structure architectures. So shows you server based network. What is server? Can you tell me about what is server? Anything, whatever you know. Where data gets stored. Yes, data gets Store. data stored. Okay, data stored on that place. Okay, fine. Another thing, which provide network. which provide network. Okay, fine. Okay, that server, VCPL server or whatever. Okay, fine. Google is server. Can you tell me? Google is server. Yes. Yes, Okay, right. yes. Very good. Yes, What is sir. that? Servers. What do you mean server now? Server means Search whatever. engine. Yeah, right. Whatever search engine. Right. Very good. Client computer give the request to the server, and server responds that. So it is also one type of computer, which is high capacity. Okay, and it sends you response. Just we are requesting one keyword. We want this information. We want this image. We want this video. We want this audio. So we are just type in the search engine, or we are searching the data information we surfing. So that time requests go to the server, and server uh, has to store that information firstly and create that website name, link, whatever web pages, and they send that web pages to the client computer. That is server. The server is a high capacity computer who responds to client computer. Our computer is client computer. Got it? Our computer is client computer, and that is a server based network. Now in between network, it is server based. This type of network, just many private limited company, many industries, they are using server, only high capacity will one computer, and then after that they connect to the many employees client computer, and whatever's work by the employee, it stored it on the server. Because just like bank, cashier is there, manager is there, auditor is there, many workers are there, policy workers or insurance workers are there, all are working on the computer, but all data stored in the workstation, that is server, one server. And they also use the centralized, now internet banking, net banking concepts, they are using what? Server. What is a server? Server is centralized. Okay, so this type of network has certain computer or server that are especially dedicated to provide various services to other computer. They give us services. Just like on web server, we are getting many services. We can search the data, we are linked to many pages, we can find out the image, we can find out the link of the videos, and on many other linking server. That is server based. Got it? Got it? Yes, student? Student? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. sir. Yeah. Don't sleep. In the morning, you are getting sleep. Don't sleep. Try server-based network. So this type of network has certain computer servers that are specially dedicated to provide various services. They are providing many services, centralized services. So in this architecture, when a node, one computer is called one node. So when a node requires any information from the server, it requests the file containing the information. File is downloaded from the server to the node, and then processing is done by the node. Just like we want one of the informations from the computer, we just search it, we download it, download the file. We want a setup file of Windows, we want the setup file of the antivirus, we can easily find out through the Google server or many other server. All website have the own web server. These are all web server. Got it? Some of the web server just give you information, they are not interacting, but many servers have the just interacting method. They give you like that, you use the login process, use the other systems process over there, so you can go inside it and you can search the data, and that is network structure architecture. Got it? What is yes? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Yes, sir. Next, client server. Abhi now only server based what? Servers has to whole thing give it, workstation all. आपका पासबुक बैंक का देखना है, आपका एटीएम का संभालना है, आपके कोई बैंक के ऑफिस में उसका इंफॉर्मेशन इंक्वायरी करना है, all information on the server. But some of the computer are client and server network.
This network has certain computer or server that are especially dedicated to provide various services to other computer that is in client. Client also can interact that. Well, client can do it. Client can log in on it. Client can enter feedback form, comments. Also, client can enter the information, whatever information they store it can upload the files to the server. That is called client. मतलब पहले इसमें सर्वर बेस में ओनली सर्वर कैन रिप्लाई, सर्वर कैन सेंड द रिस्पॉन्स. यहाँ पे क्लाइंट ऑल्सो कैन गिव द रिस्पॉन्स टू द सर्वर, or that is both can you interacting. That is called client server net. Got it? So can you give me an example? Example, now we are uploading the file. हेलो, हाँ स्टूडेंट, सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ ओके Yes, फाइन. sir. अगेन आई एम टेलिंग. हेलो, हाँ स्टूडेंट, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the network problem is going on. Okay, fine. Again, I am saying that example. University provide the website to fill the internal mark sheet. So they provide the file over in the college, and we fill all internal marks. And after filling internal marks, we are uploading the file on the website. That means what? We are uploading. That means we can interact on the website. That is called client. Client can also interact with the server, and client can also send a file. So that is called client and server net. Got it? Understood? Yes, student? Sir. Yes, sir. So in this architecture, when a client requires any information from the server, it requests the server about information. Server then will process the data, but return the request and information to the client also they can interact. That is called client server net. Got it? Next. After that, peer-to-peer network. Have you know about peer-to-peer means what? There are no dedicated server. No. There, both computers, just like your laptop and one computers are equal. Just we have to put one of the LAN, एक केबल लेने का LAN केबल अपने लैपटॉप में अटैच करने का, और दूसरा आपके पीसी में. तो दोनों कंप्यूटर क्या हो गए? In network. So peer to peer. They can share the data easily. Just like दो mobiles हम लोग peer to peer network में लाते हैं. That is in the peer to peer. No dedicated server. All computers are equal. There are no client, no server. Those who are sending, that is server. Those who are receiving, that is client. Got it? But it is only limited number of users we can use it in this architecture. So there are three network structure architecture. एक server base, only servers can reply, server can send you data, all that thing. Second, client server, and third one, peer-to-peer network. Got it? Any doubt? Yes, student? No, sir. Okay? Okay, fine. Chalo, now, important part, it is network topology. How you arrange your computer in a network system. अगर मुझे बस टोपोलॉजी बनाना है, रिंग बनाना है, स्टार बनाना है, ये सब क्या है बताता हूँ आपको. स्टार, बस, रिंग अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. जैसे हमारे लैब में है, तो हमारे लैब में ज्योमेट्रिकली अरेंजमेंट क्या करना होगा? तो वी हैव टू कीप वन ऑफ द रिसोर्स पार्ट इज अ स्विच. इंडिविजुअल केबल वी अटैच ऑन द कंप्यूटर. तो इट इज वन टाइप स्टार टोपोलॉजी. सारा सेंट्रलाइज किया है, एक स्विच लिया है, उस स्विच के थ्रू सारे कंप्यूटर में हम लोग नेटवर्क ज्वाइन कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? स्टार टोपोलॉजी. सेंट्रलाइज वी आर कीपिंग वन ऑफ द हब, and after that we are connecting all one cable to the PC and switch, and in between we can sharing the data each and every computer. That is called what? Star topology. लेकिन अगर बस
एक कॉमन केबल मैंने अटैच किया और सबको कनेक्टर लगा के उसी केबल में ज्वाइन किया। जैसे हम लोग देखो ना, बाहर कोई केबल टीवी का वायर्स गया होगा, उसको कट करके उसको ज्वाइन करेंगे, हम लोग को टीवी थोड़ा दिखाई देगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी वी कैन गेट इट, दैट इज बस। एंड रिंग each and every connected to in the circle, so there is geometrical arrangement जो भी हम लोग को करना है, that is network topology, geometric arrangement of computer resource remote। हम लोग को सर्वर कौन लगेगा कि क्या, क्लाइंट कंप्यूटर लगेगा, हब लगेगा, स्विच लगेगा, that all facilities we are arranging, that is called network topology or network structure। So there are three major star topology: star, ring and bus। Okay, so first upon I want to say the star, I show you the first upon picture, see that now, star topology क्या है। स्टार टोपोलॉजी, आपके कंप्यूटर सारे देखो, लैब के कंप्यूटर है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर कनेक्ट विद दिस लैन, ये लैन कहाँ पे जा रही है, स्विच, देयर कनेक्टर RJ45 कनेक्टर। ये ग्रे कलर के केबल आपने या ब्लू कलर के केबल आपने लैब में देखे होंगे, यस और नो, यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. यस हेलो, हाँ सर देखा है। देखा है। तो आपने वो Yes, कनेक्टर देखो, sir, एक yes. स्विच में लगाया हुआ है और दूसरा कनेक्टर उसके पीसी में लगा है, हर एक इंडिविजुअल केबल, बट ये सेंट्रल में क्या है हमारा, हब या स्विच, वी कैन से स्विच। ओके, वी कैन स्विच, ऐसे हम लोग एक प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क प्रिंटर भी बना सकते हैं कि किधर से भी प्रिंट लगाया दे दिया कमांड, तो ये प्रिंटर से आपका कमांड बाहर निकलेगा। ओके, that is called star। Okay, sir. Looks like star, each and every individual connector LAN cable connect to the hub or switch, और switch है बीच में सेंट्रल। अगर ये स्विच की जगह हम लोगों ने हब की जगह सर्वर रखा और सर्वर से स्विच रखा, तो इट इज सर्वर इज आल्सो डेडिकेटेड। ओके, तो उसके अंदर वो से वहां से रिस्पॉन्स आएगा, तो इट इज ऑथेंटिकेट। विदाउट सर्वर परमिशंस वी कैन नॉट कनेक्ट टू द क्लाइंट, और क्लाइंट से सर्वर से नेटवर्क के थ्रू हम लोग कोई भी प्रिंटर इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। अगर ये तो इंटरनेट हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्विच है, लेकिन अगर इसकी जगह पे सर्वर रहता था, तो विदाउट सर्वर परमिशन वी कैन नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट, प्रिंटर, एनीवन। अंडरस्टूड अबाउट दैट, समझ में आया? Yes, sir. Yes. इट इज स्टार। तो अभी हम लोग स्टार का क्या बताया, देखो, दिस इज कॉमनली यूज, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम, एक सेंटर में कंप्यूटर रखा है, जैसे बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग में एक सेंट्रलाइज सर्वर रखा है, वर्क स्टेशन रखा है, फ्रॉम विच द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल ओरिजिनेट। बाकी जितने भी ब्रांच है बैंक के, वहां पे उनका खुद का सर्वर या खुद का कंप्यूटर, वहां से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, देख रहा है, इंटरेक्टिंग कर रहा है, फिर सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, बट सेंट्रलाइज एक रखा हुआ है जिसके थ्रू, जैसे बैंक में आपने देखा होगा एक कमरा रहता है जिसमें एक कंप्यूटर वर्क स्टेशन होता है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो जाती है, तो उसका मतलब ये क्या है, सेंट्रलाइज। ओके, then most common ethernet network technology where each device connect to central hub or switch। मैंने अभी बताया कि सारा ethernet network टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस कनेक्ट किससे होता है, सेंट्रल हब और सेंट्रल स्विच। गॉट इट, Switch. क्लियर? हब अभी यूज नहीं करते, Yes, sir. हम लोग स्विच ही बोलते हैं, इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब इज नाउ इट इज स्विच। पहले क्या था, पैसिव हब, एक्टिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। ऐसे हब के तीन टाइप्स है, पैसिव, एक्टिव एंड इंटेलिजेंट। पर पैसिव हब जस्ट पासिंग द सिग्नल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो जनरेट नहीं करता था सिग्नल, खाली पास करता था एक लाइन से दूसरे लाइन। लेकिन बाद में एक्टिव हब आ गया, इट जनरेट द सिग्नल, बट एक्टिव पैसिव की जगह अभी स्विच यूज करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंट, इट कैन स्टोर ऑल्सो, इट कैन पास ऑल्सो, सो इट इज कॉल्ड स्विच। अभी क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट हब को स्विच। गॉट इट, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. एडवांटेजेस क्या, स्टार एडवांटेजेस क्या है, इजी टू ऐड। अगर मुझे एक पीसी और ऐड करना है और स्विच में जगह खाली है, क्या करोगे आप, एक लैन केबल लोगे, इसी में अटैच करोगे, एंड देन उसका लैन का RJ45 कनेक्टर का नोड कहाँ पे कनेक्ट करोगे, स्विच में, ताकि आपका नेटवर्क हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इट नेटवर्क में आ गया हो। व्हाट इट, दैट इज मींस इजीली ऐड और Yes, रिमूव। अगर वो sir. लैन केबल स्विच से निकाल दिया तो आपका नेटवर्क चलेगा क्या, चलेगा क्या, नहीं। दैट मींस नहीं. यू कैन इजीली नहीं। द नोड फ्रॉम द नेटवर्क सिस्टम। हम लोग नेटवर्क से निकाल भी सकते हैं। जैसे आपको देखो, आपके इधर राउटर होता है, राउटर में 4 लैन होते हैं, देखा है कि पीछे 4 लैन होती है, या 6 लैन 8 लैन, जैसे आपका राउटर की कैपेसिटी है। हाँ, तो देखो पोर्ट में हम लोग होता है. और एक नेटवर्क में लाना चाहते हैं, तो एक लैन केबल लो, अटैच करो, आपका लैन उधर भी उस पीसी में भी डायरेक्टली फिजिकली अटैच हो सकता है।
हो सकता है कि नहीं? गॉट इट? हाँ Yeah, हाँ that हो is जाएगा, what हो you can जाएगा। easily add or easily remove. Then node failure does not bring down entire network. इसमें क्या होता है स्टार में, एक आध नोड नहीं चला, एक पीसी नहीं चला, पूरा नेटवर्क सिस्टम डाउन नहीं होता है। एक कंप्यूटर नोड, एक नोड फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क सिस्टम डाउन नहीं होता है। ओनली दैट नोड्स कैन नॉट गेट द नेटवर्क, बट बाकी कंप्यूटर को नेटवर्क मिलेगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। इट इज इजियर टू डायग्नोस नेटवर्क प्रॉब्लम थ्रू सेंटर। हम लोग वो डायग्नोस भी कर सकते हैं। उसमें लाइट आ रहा है क्या, उसमें ग्रीन कलर का लाइट आता है तो हम लोग सोच सकते हैं अरे हाँ इसमें लाइट नहीं आ रहा है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें लाइट आ रहा है तो ये नेटवर्क चालू है। दैट इज इजिली डायग्नोस योर नेटवर्क प्रॉब्लम। एडवांटेजेस। देन डिसएडवांटेज मी चालू ठेवलेला आहे. ओके, बघू शकता. ओके, नाउ that is another part. It is there. What disadvantages is given over there? Failure of central computer will bring down the entire network. अगर आपका हब खराब हो गया, हब या स्विच खराब हो गया तो आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाएगा. बराबर है? स्विच, हब, बरोबर। सेंट्रल सर्वर जो फेल हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क सिस्टम खराब है. दैट इज डिसएडवांटेज. पूरा मतलब एक नहीं, पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम खराब. अगर सर्वर, आपको मालूम है सर्वर फेल हो जाता है तो आपको क्या बोलते हैं, सर्वर फेल मतलब क्या, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आपका पूरा एंटायर नेटवर्क सिस्टम कम हो जाए. जैसे वीसीबीएल सर्वर का खराब हो गया तो पूरा केबल नेटवर्क खराब हो गया. खराब मतलब केबल नेटवर्क को प्रॉब्लम, नेटवर्किंग नहीं आता है तो इट विल गो डाउन, राइट? दैट इज डिसएडवांटेज. एज एवरी नोड रिक्वायर्स न्यू केबल. ये केबल कॉस्ट भी ज्यादा है क्योंकि हर एक नोड को, हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअल केबल अटैच करना पड़ेगा. Got it? Cable network also doing like that. They attach, they use the repeater, they use the bridge, and then after that they transfer you network. So आपको केबल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है इससे. समझ में आया? Got it? Okay. Next. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आफ्टर दैट, ये पिक्चर आपने देखा, स्टार टोपोलॉजी में हर एक वर्क स्टेशन बताया है. 1 2 3 4 अलग अलग सिटी में इतने वर्क स्टेशन है, वो सारे एक स्विच में अटैच किए होंगे या एक सर्वर में. देन दे ट्रांसफर द डेटा. दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी. नाउ बस टोपोलॉजी. आई शो यू द फर्स्ट अपॉन पिक्चर्स. सी दैट नाउ बस टोपोलॉजी क्या दिखाई दे रहा है आपको? बस टोपोलॉजी एक कॉमन केबल है, एक कॉमन केबल है, फिर एक कनेक्टर यहाँ से यूज करके अटैच करेंगे एक कंप्यूटर, फिर एक कनेक्टर कट करके यहाँ से यूज करेंगे अनदर कंप्यूटर, फिर यहाँ पे तो कॉमन केबल को कनेक्टर ज्वाइन करके जब हम लोग बस नेटवर्क टोपोलॉजी यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी. गॉट इट? क्लियर? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Okay, fine. Yes, So Yes, what is sir. bus network? This structure is very popular for LAN. ये पहले बहुत पॉपुलर था, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क. A single network cable runs in the अभी भी है building. ना? हेलो, हाँ अभी भी यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करते हैं? क्योंकि केबल कॉस्ट बड़ा कम करना है. आजकल तो वायरलेस हो चुका है तो ये क्या करते हैं, वायरलेस राउटर लगा देते हैं, फिर सब में एक एक छोटा छोटा अपना वाईफाई का डिवाइस होता है जो ब्लूटूथ होता है वो लगाया कि ऑटोमेटिकली आता है. वो भी एक वन टाइप ऑफ बस ही है. बट अगर कॉमन केबल को अटैच किया तो फिजिकली अटैच होता है, तो फिजिकली कनेक्टर रहेगा. जैसे आप अपने मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आपके सोसाइटी में एक केबल आया होगा, केबल टीवी के बारे में केबल आया, उस केबल से उन्होंने क्या लिया है, कनेक्टर यूज किए हुए, कनेक्टर यूज किए हुए. तो वो कनेक्टर क्या करता है, एक कॉमन केबल को कनेक्टर यूज करके और तीन जन को और देता है केबल, फिर वापस दूसरा कनेक्टर यूज करता है उसको उसके अंदर से, फिर वापस और 3 जन को देता है. ऐसे पूरे सोसाइटी में आपके बिल्डिंग्स में केबल किससे होता है, एक कॉमन केबल से जाता है. What do you mean that? Single network cable runs in the building, campus. So all nodes link with this combination line with the 2 endpoints call us what? Bus topology. Got it? समझ में आया? एंड अगर उस केबल को टर्मिनेट करना है तो एक टर्मिनेटर यूज करते हैं लास्ट में जाके वो टर्मिनेट हो जाए. तो देयर 2 ends cable are terminated with the terminator. Got it? Clear about that? So what टर्मिनेटर मतलब केबल का एंड जो है ना, एंड अभी एक बाकी केबल है जो आगे जाने वाला ही नहीं है तो उसको बंद करने के लिए आप ना टैप लगाते हैं, वैसा उसको बोलते हैं टर्मिनेटर. लॉक करते हैं, जुगाड़ करते. नहीं जुगाड़ नहीं, लॉक. आपका केबल आगे कंटिन्यू नहीं जाना चाहिए. अब उस केबल का लास्ट नोड में क्या करना पड़ेगा, कनेक्टर लगाना पड़ेगा. आगे केबल नहीं पास आउट करनी है तो उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट लगाएंगे ताकि वो आगे एंड हो गया उसका, आगे नहीं जाएगा.
अगर आगे लगाना है तो वापस Okay, उसको sir. कनेक्टर लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, राइट? गॉट इट? Yes. sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. What is cable advantages and disadvantages? Cable cost is reduced. इसमें केबल कॉस्ट कम हो गया, आप एक कॉमन केबल यूज कर रहे हो. रिलायबल इन वेरी स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क के लिए ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, इजी टू एक्सटेंड. टू केबल्स कैन बी इजीली ज्वाइन विद कनेक्टर, दो केबल इजीली कनेक्टर से ज्वाइन हो सकते. रिपीटर कैन ऑल्सो बी यूज, मतलब रिपीटर मतलब अगर केबल का और भी केबल आगे कंटिन्यू करना है कनेक्टर से, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटर यूज करेंगे. जैसे केबल बीच में से कट हो जाता है तो क्या बीच में करें, एक रिपीटर यूज करते, कनेक्टर. So that is repeater and it continue. Failure of any node does not affect the whole network. लेकिन एक फेलियर, एक नोड खराब हो गया, एक कंप्यूटर खराब हो गया, एक नेटवर्क का कनेक्टर खराब है, तो पूरा केबल खराब नहीं होता है, पूरा नेटवर्क सिस्टम नहीं खराब होता है, तो वो चलते रहेगा, नेटवर्क सिस्टम कंटिन्यू. दैट फेलियर ऑफ एनी नोड डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क. डिसएडवांटेज है, Yes, sir. डिसएडवांटेज है कि हेवी नेटवर्क ट्रैफिक, एक कॉमन केबल्स की वजह से ट्रैफिक होता है, सो इट कैन स्लो, बस नेटवर्क इज स्लो. ओके, मेन केबल फेल्स, होल नेटवर्क इज डैमेज. अगर वो कॉमन केबल था वही खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क सिस्टम डाउन हो जाएगा. गॉट इट? दैट इज डिसएडवांटेज. हेवी नेटवर्क sir. होता है बरोबर. और एक कॉमन केबल खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क सिस्टम डाउन हो जाएगा. दैट इज बस नेटवर्क. गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? हाँ, आप वो Yes, टर्मिनेटर sir. पूछ रहे थे ना, तो ये यहाँ पे आगे अगर केबल नहीं जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, टर्मिनेटर यूज करेंगे ताकि वो आगे कोई सिग्नल पास आउट ना कर सके, ये दो एंड में. ओके समझा. ओके फाइन. सो कंटिन्यू. नेक्स्ट वन, रिंग टोपोलॉजी. पहले मैं पिक्चर दिखा देता हूँ रिंग टोपोलॉजी का. अच्छा ओके, यहाँ पे उन्होंने पिक्चर दिया नहीं है. फाइन. रिंग कैसे होता है, मैंने एक से दूसरा कनेक्ट होता है रिंग में. एक सपोज मुझे 5 पीसी है, फर्स्ट पीसी कनेक्ट विद द सेकंड, सेकंड विद द थर्ड, थर्ड विद द फोर्थ, फोर्थ विद द फिफ्थ एंड फिफ्थ विद द अगेन वन फर्स्ट. मतलब क्या हुआ, एक सर्कल में कनेक्ट हो गया, बराबर. एक लीडर्स, कोई ना बहुत लीडर्स में काम करते हैं. लीडर्स में मतलब अगर हम हमारे यहाँ पे 10 एम्प्लॉय है तो 10 एम्प्लॉय को एक नेटवर्क सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, बाकी कोई भी अदर कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग रिंग टोपोलॉजी में अरेंज करते हैं. So it was commonly used network structure for LAN, but it is extension of bus network. एक bus network को extension है, where last computer is connected with the first. जो last वाला PC है वो पहले PC को connect है, मतलब first to second, second to third, third to fourth, fourth to fifth, fifth to again first. Okay, so in this topology, network cable passes from one node to another until all nodes are connected in a form of ring. मतलब ऐसे लगता है कि एक ring में connect है. ओके जैसे बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी को हम लोग एक रिंग में कनेक्ट कर सकते हैं. ओके एंड लिंक्स आर इन यूनी डायरेक्शनल, यूनी बाई डायरेक्शनल नहीं, यूनी मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में चला जाता है, यूनी. ओके फर्स्ट मतलब जैसे फर्स्ट कंप्यूटर का ट्रांसमीटर सेकेंड कंप्यूटर का रिसीवर होगा, सेकेंड कंप्यूटर का ट्रांसमीटर थर्ड कंप्यूटर का रिसीवर होगा, थर्ड कंप्यूटर का ट्रांसमीटर फोर्थ कंप्यूटर का रिसीवर होगा, और फोर्थ का फिफ्थ, और फिफ्थ का अगेन फर्स्ट. सो दिट इज इन द रिंग. जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ये आपके टावर, वायरलेस टावर है जो आपको मोबाइल रडार्स वगैरह आपके लगाए हुए, हर एक के खुद के एंटीना लगाए हुए हैं हर एक कंपनी के, जिनके जैसे वोडाफोन, आइडिया, जियो एंड ऑल. बट आपने कभी सोचा है वो स्टेशन टू स्टेशन रिंग टोपोलॉजी यूज करते हैं, एक फ्यू किलोमीटर एरिया में और एक टावर हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो सिग्नल वहां तक लिमिटेशन है. 1 लाख कंप्यूटर्स आर 1 लाख मोबाइल्स आर कनेक्टेड, उसके आगे वो नहीं जाएगा. तो उसके आगे होता है तो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वीक आना चालू होता है, नेटवर्क कम होना चालू होता है. देन दे हैज टू यूज द अनदर टावर लिंक. तो वो लिंक करने के लिए यूनी डायरेक्शन स्टेशन होते हैं, और इट इज दे आर यूजिंग टोकन पासिंग सिस्टम एंड दे यूज द रिंग नेटवर्क सिस्टम, रिंग टोपोलॉजी. गॉट इट? अंडरस्टूड? यस स्टूडेंट? Hello? Yes, sir. Yes, Then sir. data is transmitted using that token passing. एडवांटेज है यहाँ पे ये सेम एडवांटेज, लेस केबल कॉस्ट, रिंग नेटवर्क इंडिविजुअल केबल नहीं लगती है, रिंग नेटवर्क आर इजीली एक्सटेंडेबल, किसी को भी हम लोग इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं रिंग टोपोलॉजी में. और एक कंप्यूटर उसको कनेक्ट करो, उसको फर्स्ट पीसी को कनेक्ट करो. डिसएडवांटेज, फेल्यूर ऑफ एनी नोड सर्वर केबल विल डैमेज. इसमें डिसएडवांटेज ज्यादा है. कैसे? हर एक नोड को कनेक्ट होना जरूरी है,
सर्वर को केबल को, ओके एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट होना जरूरी है, बट अगर केबल डैमेज हो गया बीच में, पूरा नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी करा, अगर फर्स्ट पीसी सेकंड पीसी में डेटा जा रहा है पर थर्ड पीसी के बीच में केबल खराब है तो वो आगे जाएगा ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड को ही मिलेगा, थर्ड फोर्थ को जाएगा ना, फर्स्ट पीसी ने जो फोर्थ पीसी को डेटा दिया है वो सेकंड तक ही जाएगा, थर्ड में वो डिसकंटिन्यू हो गया, दैट इज फेलियर। डेटा हैज टू ट्रैवल थ्रू एवरी कंप्यूटर थ्रू ट्रांसमिशन, हर एक कंप्यूटर के थ्रू पास आउट होता है। इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉलेशन और एक्सपेंसिव भी है, बट मेनी स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट विद द रिंग टोपोलॉजी, गॉट इट। बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी से कनेक्ट करके हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाया जाता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट मेश आपने सुना होगा, एक पीसी कनेक्ट विद द 2 पीसी, अगेन 2 पीसी कनेक्ट विद द 4 पीसी, अगेन 4 पीसी कनेक्ट विद द 8 पीसी, दैट इज मेश। इट रेफर्स टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट यूजिंग इन टेलीविजन लाइन, कोई भी पीसी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, फर्स्ट पीसी कनेक्ट विद द सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पीसी कनेक्ट विद द सेकंड थर्ड, whatever that is called, each and every computer are connected each other, उसको बोलते हैं mesh network topology. So in this arrangement, each computer and terminal is connected to each other by a dedicated point-to-point link. This network provides high reliable. ये high reliable होता है, जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क सिस्टम किसी भी पीसी को किसी को कनेक्ट कर सकता है हम लोग, तो वो नेटवर्क सिस्टम इज अ मेश नेटवर्क। एडवांटेज है डायरेक्ट कनेक्शन इज अवेलेबल बिटवीन एनी टू कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस ये है कि केबल कॉस्ट इज मोर, क्योंकि केबल इंडिविजुअल अगर हम लोग ने फर्स्ट पीसी का कनेक्टिंग सेकंड को भी लगाया, थर्ड को भी लगाया, फोर्थ को भी लगा, केबल कॉस्ट बढ़ेगा और इंस्टॉलेशन भी डिफिकल्ट होता है। अंडरस्टूड, क्लियर? सो व्हाट आर द टोपोलॉजीज? What are the topologies? बोलो जरा। Topology is the arrangement of bus topology. Yeah. Star, remote bus, devices swing. and communication facility is known as a network topology. एक geometrical arrangement. We are arranging geometrically. एक सिंगल केबल में अरेंज करो Yes, तो sir. बस होगा, इंडिविजुअल केबल हर एक को हब स्विच को अटैच करो तो स्टार होगा, एक इंडिविजुअल पीसी हर एक पीसी से कनेक्ट करके सर्कल में हम लोग कनेक्ट करेंगे तो